और फाइनली हम लोग अपने मंजिल की तरफ बढ़ चुके हैं। और अभी हम लोग जो है मानिक स्तूप, जो कि बुद्ध भगवान का पूरा मंदिर है, टेम्पल है, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। मुजफ्फरपुर टू वैशाली सिवान से हैं, बिलोंग्स करते हैं। एक आदमी जो है जो फ्रेंड उड़ीसा नहीं सिवान से, और एक फ्रेंड आगे गए हैं जो कि उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे फ्रेंड्स बने हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. और अभी हम लोग पूरे शांति स्तूप की तरफ कूच कर रहे हैं। मतलब मौसम इतना बवाल अब लग रहा है। मौसम अब हम लोग मुताबिक हो चुका है। उस समय से बारिश हो रहा था तो ज़्यादा वीडियो कर नहीं पाए रास्ते का। और फाइनली हम लोग अपने मंजिल की तरफ बढ़ चुके हैं। और अभी हम लोग जो है मानिकपुर चौक से लेफ़्ट ले लिए हैं। लेफ़्ट लेने के बाद अभी हम लोग वैशाली वाले रास्ते में आ चुके हैं। लोकेशन आपको देखना है तो थोड़ा सा घुमाता हूँ लोकेशन की तरफ। ये कुछ ऐसा लोकेशन है। तो आपने देखा लोकेशन क्या है, मतलब पूरा एकदम प्राकृतिक से भरा हुआ वैशाली जिला है। और अभी हम लोग वैशाली शांति स्तूप की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइनली हम लोग अब शांति स्तूप, जो कि बुद्ध भगवान का पूरा मंदिर है, टेम्पल है, वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। मुजफ्फरपुर टू वैशाली। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ट्रैवलिंग साधन क्या था। हमारा जो है साइकिल से ट्रैवल हुआ। मैं साइकिल को भी दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत क्लिप अंदर में डालूंगा। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. As you fade away.
told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. अभी हम लोग के साथ कुछ हम लोग के अभी यहाँ पे फ्रेंड बने हैं जो कि सिवान से हैं, बिलोंग्स करते हैं। एक आदमी जो है जो फ्रेंड उड़ीसा सिवान से, और एक फ्रेंड आगे गए हैं जो कि उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे फ्रेंड्स बने हैं। अभी जो है ट्रैवलिंग करते करते हम लोग वैशाली ट्रिप पे आ चुके हैं, वैशाली शांति स्तूप के पास आ चुके हैं। और अभी हम लोग वैशाली पे राउंड लगा रहे हैं, शांति स्तूप का राउंड लगा रहे हैं। और आपको जो है पूरा वीडियो मिलता रहेगा, मतलब सीरीज वाइज बना रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको भी देखने में बोरिंग न फील हो, आप भी इंजॉय कर सको, इसलिए सीरीज वाइज थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा स्टे करके आपको पार्ट सेकेंड दूंगा, इसके बाद सेकेंड थर्ड पार्ट दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में। और अगले पार्ट में भी बहुत ज़्यादा वाइब आएगा क्योंकि वहाँ पे भी जो बहुत म्यूज़ियम में बहुत मज़ा आने वाला है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन ये सब दबा उबा कर रखिए भाई। और पूरे वैशाली को मैं एक्सप्लोर करूँगा, पूरे धीरे धीरे पूरे वैशाली को एक्सप्लोर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।